what's up again, word warriors? We have reached letter R part 3 and trust me, we are not retreating now. This final round rumbles with energy, revels in expressions and reveals the richness of powerful vocabulary. Some of these words roar, some reflect, and some completely rearrange a sentence's impact. So, buckle up, let's wrap up letter R with resonance, rhythm, and real word mystery. The first is resurgence, and this is the revival or return of something after a period of decline. ये वर्ड बेसिकली सजेस्ट करता है किसी चीज का रिवाइवल होना या फिर रिटर्न आफ्टर इट्स डिक्लाइन, आफ्टर एनी काइंड ऑफ सप्रेशन, ठीक है, उसका डाउनफॉल आया, ठीक है, एंड इट टुक अ ब्रेक एंड वर्ब रिवाइव होके वापस आया, ठीक है, रिन्यूड इंक्रीज, ठीक है, इट सजेस्ट स्ट्रॉन्ग रिटर्न, इट इम्प्लाइज रिन्यूड एनर्जी, कम बैक, राइजिंग अगेन विद फोर्स. It's not just coming back, it is coming back stronger. Example, there was a resurgence in interest after the new release. Now we have resurrect, and this means to bring something back into use or existence again. Resurrect का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जो अब currently आप ज़्यादा use नहीं कर रहे, ठीक है, for whatever reason, उसको जो है आप वापस in purpose लेकर आओ, ठीक है. It suggests restoring something thought finished. It implies revival, restoration, reactivation. It means bringing something back to life. Example, the company tried to resurrect the old brand. कि मतलब अब जो चीज़ almost dead हो चुकी है या फिर अब वो किसी काम की नहीं है, उसको वापस life में देना. Now we have retch, and this means to make the sound or movement of vomiting without producing anything. मतलब जब आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ठीक है, एंड यू ट्राई टू गेट इट आउट बट कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, इट इज द साउंड एंड द मूवमेंट ऑफ वॉमिटिंग विदाउट एक्चुअली एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ठीक है. इट्स अ जस्ट फिजिकल रिजेक्शन. इट इम्प्लाइज इनवॉलेंटरी रिएक्शन, बॉडीली रिवोल्ट एंड वायलेंट डिस्कम्फर्ट. इट्स हार्श, एब्रप्ट एंड अनप्लेजेंट. एग्जाम्पल, द स्मेल मेड हिम रिच, उबाकना, ठीक है. Now we have retinue, and this is a group of advisors or followers accompanying an important person. Retinue जो होता है एक ग्रुप होता है जिसमें advisors, assistants या फिर followers आते हैं जो कि एक important person को follow करते हैं, ठीक है, या फिर उसके साथ चलते हैं, ठीक है, they accompany them. It suggests status displayed through company कि देखो मैं तो important हुई हूँ और मेरे पीछे इतने लोग हैं, ठीक है, who also have a higher ranking in their own personal fields. It implies entourage, visible support and hierarchy. Retinue जो होता है reflect करता है the importance of the one being followed. Example, the celebrity arrived with a large retinue. Now we have retort, and this means to reply quickly and sharply to a remark. Retort का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को ना किसी चीज़ पे एक sharp या फिर witty reply करो, ठीक है, something that सामने वाला आपसे expect ना कर रहा हो. It suggests quick defensive response. It implies comeback, verbal counter attack and immediacy कि उसी instant जैसे ही आपको किसी ने कुछ बोला आपने पलट के कुछ और बोल दिया, ठीक है. It's reactive and often pointed. Example, she had a clever retort ready. Now we have retrench, and this means to reduce expense or scale back operations. Retrench का मतलब होता है जब आपने खर्चे reduce करो या फिर जो आपके expenses हैं उनसे scale back करो, ठीक है. It suggests pulling inward to conserve. It implies tightening resources, cutting excess and defensive reduction. It's about survival through contraction. Example, the company retrenched during the downturn. कि जो फालतू के खर्चे हैं, जो कि ऐसे खर्चे जिनके बिना काम चल सकता है, उनको कट ऑफ कर दो बिल्कुल. Now we have retribution, and this is a punishment given in return for wrongdoing. Retribution जो है punishment होती है as a deserved payback for the action or the wrongdoing that you did, ठीक है. It suggests moral balancing through consequences. It implies justice, repayment for wrongdoing and restoring order by penalty. Punishment से heavy है and it carries righteousness. Example, he believed the sentence was retribution for the crime. Now we have retrograde, and this means moving backward or reverting to an earlier state. Retrograde का मतलब होता है जब आप अपनी current position से एक उससे नीचे वाली position पे जाओ, ठीक है, या फिर revert करो to an earlier condition कि आपकी पहले condition ऐसी थी, आप फिर उससे progress करके उस पे गए थे upper पे, लेकिन अब वापस आप नीचे आ चुके हो,
ठीक है. It implies decline disguised as return. It implies regression, opposition to progress, and backward motion. It can describe movement, ideas, or behavior. Example, the policy was criticized as retrograde. Now we have retrogress, and this means to return to a less advanced condition. इसका मतलब होता है कि आप जो है अपनी करंट स्टेट से मूव करके एक बैकवर्ड या फिर एक अर्लियर स्टेट पे आओ. ठीक है. इट्स अ जस्ट डिक्लाइन आफ्टर एडवांसमेंट, कि बढ़ने के बाद, प्रोग्रेस होने के बाद आप वापस उसी स्टेट पे आ गए हो. इट इम्प्लाइज स्लिपिंग बैक, लॉसिंग प्रोग्रेस एंड रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. ये सिर्फ वापस जाना नहीं है, इट्स गोइंग बैक जब आप आगे बढ़ने चाहिए थे. ठीक है. And there's disappointment built into this word. It can imply to skills, society, behavior, progress in general. Example, without continued effort, the project began to retrogress. Now we have retroversion, and this is the act of turning something back to a previous state. Retroversion का मतलब होता है कि reversal of direction or orientation. It implies inward turning, structural reversal, and returning to an earlier position. It's often technical, like medical, grammatical, or mechanical. Example, the report discussed the retroversion of the structure. Now we have revel, and this means to enjoy oneself in a lively way, and revelry refers to noisy celebration. रेवल का मतलब होता है जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा ग्रेट प्लेजर लो. ठीक है. इट्स अ जस्ट ओपन अनहिबिटेड एंजॉयमेंट. इट इम्प्लाइज सेलिब्रेशन, इंडल्जेंस एंड डिलाइट एक्सप्रेस्ड आउटवर्डली. आप अपनी खुशी दिखा रहे हो सबको. ठीक है. इट्स नॉट क्वाइट हैप्पीनेस. एग्जाम्पल, दे रेवल्ड इन देयर विक्ट्री. नाउ वी हैव रेवियर, एंड दिस मीन्स टू रिस्पेक्ट डीपली. Reverence is deep respect, and reverent describes showing such respect. रिवेयर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को जो है अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, ऑनर दिखा रहे हो. ठीक है. इट्स अ जस्ट ऑलमोस्ट सेक्रेड एडमिरेशन. इट इम्प्लाइज रेवरेंस, स्टीम, क्वाइट, डिवोशन. ये रिस्पेक्ट के बियॉन्ड जाता है. इट अप्रोचेस ऑ. एग्जाम्पल, शी रेवेयर्ड हर मेंटर. Now we have revile, and this means to criticize in a harsh or abusive manner. रिवाइल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो इन अ वेरी हार्श एंड अब्यूसिव वे. आप वर्बली अटैक कर रहे हो, विच इज़ फ्यूल्ड बाय कंटेम्प्ट. इट इम्प्लाइज इंसल्ट, डिनंसिएशन, हॉस्टिलिटी एक्सप्रेस्ड ओपनली. क्रिटिसाइजेशन से स्ट्रॉन्गर वर्ड है ये. एग्जाम्पल, ही वॉज पब्लिकली रिवाइल्ड फॉर हिज एक्शंस. द वर्ड फील्स एग्रेसिव. Now we have revulsion, and this is a strong feeling of disgust or repugnance. Revulsion जो होता है, this is a strong feeling जहाँ पे आपको किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा disgusted feel हो रहा है, आप revolted feel कर रहे हो. ठीक है. आप emotionally recoil कर रहे हो उस चीज़ से. ठीक है. पीछे हट रहे हो. It implies shock, rejection, and intense dislike. It's immediate and physical feeling. Example, she felt revulsion at the sight. Now we have rhetoric, and this refers to a persuasive or impressive speaking or writing. Rhetoric जो होता है it basically refers to the art of persuasing speaking or writing, जो कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इन्फ्लुएंस करती है पीपल को. ठीक है. परसुएड कर देती है लोगों को. इट इम्प्लाइज परसुएशन, स्ट्रैटेजिक वर्डिंग एंड इमोशनल अपील. न्यूट्रल स्किल होती है ये sometimes, and sometimes it hints at empty or exaggerated speech. Example, the speech was filled with powerful rhetoric, powerful words and expressions. Now we have riddance, and this refers to being free from something unwanted. Riddance का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से जो आपको नहीं चाहिए थी उससे आप फाइनली फ्री हो रहे हो. ठीक है. It implies liberation from nuisance. It implies dismissal, freedom and removal of burden. ये often phrases में use किया जाता है. For example, good riddance meaning relief, की अच्छा है मुझे छुटकारा मिला इस चीज़ से. Example, when the noisy machine was removed, it was good riddance. Now we have rudiment, and this is a basic principle or first stage of learning something. Rudiment is basically a basic principle or fundamental element जो कोई बंदा first stage पे सीख रहा है. ठीक है. It suggests early undeveloped stage. It implies foundation, beginning form and raw simplicity. Starting layer है, finished product नहीं है, and आप उस चीज़ को सीख रहे हो. ठीक है. Example, students learn the rudiments of grammar first, like the basic principles grammar के. Now we have ruffle, and this means to disturb or upset someone's calmness. Ruffle का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को unsettle या फिर disturb कर देते हो. It suggests light disturbance. It implies slight irritation,
small disruption and surface agitation. Destruction नहीं है, सिर्फ disturbance है. Example, the comment seemed to ruffle him, disturbed him in some way. Now we have rumble and this refers to a deep, heavy, continuous sound. Rumble जो होती है ना, एक deep, continuous sound होती है जो कि कहीं दूर से आ रही है, ठीक है, या फिर किसी surface के नीचे से आ रही है. It suggests low building force. It implies distant thunder, underground movement या फिर something approaching. Literal sound हो सकती है या फिर conflict quietly forming वाली sound हो सकती है कि like ऐसे लगता है कि किसी surface के नीचे से कोई आवाज आ रही हो. Example, we heard the rumble of thunder in the distance. Now we have rummage and this means to search through things in a careless way. Rummage का मतलब होता है जब आप चीज़ों के बीच में किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो in a messy and in unorganized way. ठीक है, it suggests active, somewhat chaotic searching. It implies digging through, disorganization and persistence. Need search नहीं है कि जहाँ से आप चीज़ उठा रहे हो वहीं पे वापस रख रहे हो after looking under it. उठा के यहाँ रखा फिर यहाँ रखा and पूरा उसको messy कर दिया. She rummaged through her bag for the keys. Now we have rumpus and this is a noisy disturbance or commotion. This word basically refers जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा disturbance हो, commotion हो, बहुत लोग हो, ठीक है, and there is some kind of shouting, argument or disorder. It suggests loud and chaotic uproar. It is less serious than riot but definitely disruptive. Example, there was a rumpus in the hallway after the announcement. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words and root words. It makes learning more organized, easier and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.